My dear students, today onwards, I am starting a new series on pharmaceutical dosage form. This is the first video of this series, and in this video tutorial, I will cover what is dosage form, why do we need dosage form, and what are the various classification of dosage form. आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स के ऊपर में, और ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि डोसेज फॉर्म होता क्या है, डोसेज फॉर्म की जरूरत क्या है, और डोसेज फॉर्म के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ, आपके क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और सभी लोग इस सीरीज का लाभ उठाइए। Please get the benefit of this particular series. Please like and subscribe to this channel. So before going to the detail of dosage form के डिटेल में जाने के पहले let us understand two definitions. हमें ये समझ में आना चाहिए कि ड्रग क्या है and dosage form क्या है. So drug may be defined as an agent intended for use in the diagnosis, mitigation, treatment, cure or prevention of disease in man or in animal. मतलब क्या हुआ इसका कि ड्रग एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज कुछ भी हो सकता है वो। ड्रग एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रोग की पहचान, डायग्नोसिस मतलब रोग की पहचान में, मिटिगेशन मीन्स रोग की रोकथाम में, ट्रीटमेंट में मीन्स रोग के इलाज में, रोग के क्योर में, डिजीज के क्योर में, और डिजीज के रोकथाम में। वो मैन के अंदर मतलब मनुष्य अथवा जानवरों के अंदर में। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लीजिए। डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं? बेरियम सल्फेट यूज करते हैं। बेरियम सल्फेट को हम यूज करते हैं एज अ रेडियो कंट्रास्ट मीडिया, और ये जो बेरियम सल्फेट है वो सीटी स्कैन करने के टाइम पे या तो ओरल सॉल्यूशन के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, और उससे एक्सरे कंट्रास्ट का काम करता है, और एक्सरे कंट्रास्ट के द्वारा अपने को पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो बेरियम सल्फेट का यूज होता है सीटी स्कैन के लिए, बेरियम सल्फेट का यूज होता है एंजियोग्राफी के लिए। तो दिस इज फॉर द diagnosis. This is a drug. Barium sulfate is a drug which is used for the diagnosis purpose. Treatment, आपके बीपी की जो दवा है, शुगर की जो दवा है, सर दर्द की जो दवा है, ये रोग के लक्षण के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं। ट्रीटमेंट, क्योर जैसे एंटीबायोटिक है, ये आपके इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज करते हैं। पेनिसिलिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, टेट्रासाइक्लिन हो गया। ये सारे एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है रोग के क्योर करने के लिए, बीमारी को क्योर करने के लिए। अगला आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में आप जो भी वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं, ये रोग के रोकथाम के लिए यूज किया जाता है कि रोग हो ही नहीं। अभी हमारा कोरोना का वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं सभी लोग, वैक्सीन लगा लेंगे तो वायरस होगा ही नहीं। तो ये हो गया ड्रग। अब डोसेज फॉर्म क्या है? तो डोसेज फॉर्म आर द मीन बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। मतलब डोसेज फॉर्म, ड्रग तो समझ में आ गया, लेकिन डोसेज फॉर्म क्या है? डोसेज फॉर्म वो तरीका है जिसके द्वारा ड्रग्स को शरीर के अंदर तक पहुंचाया जाता है। डोसेज फॉर्म बहुत तरीके के होते हैं, ड्रग के नेचर के ऊपर, हमारे शरीर की अवस्था के ऊपर। There are so many different kind of dosage forms. वो आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे कि डोसेज फॉर्म क्या है। तो अभी के लिए इस स्लाइड के लिए ड्रग एंड डोसेज फॉर्म के डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया गया। अभी ये देखते हैं कि डोसेज फॉर्म की जरूरत क्या है। What is the need for the dosage form? तो डोसेज फॉर्म की जरूरत है क्योंकि हमें एक्यूरेट डोज चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आपके पास एक बॉटल में पैरासीटामोल का पाउडर दे दिया और वो बॉटल आप आपके साथ में लेके जा रहे हैं।
पैरास्टामोल का डोज है 500 मिलीग्राम। अभी आपके सर में दर्द हो रहा है और आपको 500 मिलीग्राम वो पाउडर निकाल करके खाना है, और दूसरा आपके पास एक 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल का एक टैबलेट दिया हुआ है। तो दोनों में से कौन सा आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, कहाँ पे आपका डोज ज्यादा एक्यूरेट होगा? अगर आप 500 मिलीग्राम पाउडर में से आप निकालेंगे तो आपको एक बैलेंस, वेइंग करने के लिए बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। आप कहाँ से वो बैलेंस लेकर के आएंगे? अगर मान लीजिए कि आप ऑफिस गए हैं, कहीं ट्रैवलिंग में हैं और आपको सर में दर्द हुआ, तो क्या करेंगे? आप बैलेंस ढूंढते बैठेंगे वहां पे। आर यू गोइंग टू सर्च फॉर अ बैलेंस टू वे 500 मिलीग्राम? नो, इट्स बेटर टू टेक वन टैबलेट। इट्स ऑलवेज बेटर टू काउंट देन वे। तो डोसेज फॉर्म क्या करता है कि वो जो भी ड्रग है उसको एक्यूरेट, एग्जैक्ट डोज जितना चाहिए खाने के लिए टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में वो बना देता है, एंड देन इट इज अवेलेबल फॉर द पब्लिक। सो अगर आपको पैरास्टामोल खाने की जरूरत है तो जस्ट आपको एक स्ट्रिप या एक बोतल में पैरास्टामोल टैबलेट लेकर के चलने की जरूरत पड़ेगी। आपको उसके साथ में बैलेंस लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं दूसरे रीजन। जो ड्रग है, दीज आर फाइन केमिकल्स, और मेनी केमिकल्स आर हाईली ससेप्टेबल टू इन्वायरमेंट। अगर आप उसको पाउडर के फॉर्म में रखें तो थोड़े समय के अंदर ही वो खराब हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक सेब को काट करके रख दें तो थोड़े समय के बाद वो काला पड़ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सेब के अंदर जो केमिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्शन होने के बाद वो काला हो जाता है। उसी तरीके से हमारे पास में बहुत से ड्रग हैं जो कि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर से इंटरैक्ट करता है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन से इंटरैक्ट करता है, एनवायरनमेंट में लाइट से इंटरैक्ट करता है। लाइक एस्पिरिन, अगर आप एस्पिरिन के पाउडर को रख दीजिए, इट विल इंटरैक्ट विथ एनवायरमेंटल मॉइस्चर एंड इन नो टाइम it will get converted into salicylic acid and the drug will get spoiled. You cannot use it. So, drug is getting formulated into the dosage form to protect it from environment. Okay? The third reason, there are certain drugs that you cannot directly take. Because if you take those drugs directly, it will go into your stomach and it will either break or it will damage your stomach. You take example of omeprazole. Omeprazole, if it is taken directly, it will get spoiled in the stomach. Stomach में जाके खराब हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर एंटेरिक कोटिंग करते हैं। एंटेरिक कोटिंग करने के बाद क्या होता है कि वो जो हमारा ओमेप्राजोल है वो गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में जो एसिड है उससे बच जाता है और स्टमक से बाहर निकल करके वो डिसइंटीग्रेट होकर रिलीज होता है, एंड देन it is helping us in relieving from the acidity. Okay, there are certain coating done which is delaying the release, that is enteric coating. The next fourth reason why we need dosage form is for masking taste and odor and the patient compliance. If you are having a drug which is having very bad odor, there will be no people will willing to take that particular medicine. And over a period of time, what happened? That people will not take. And when they will not take the medicine, they will not get relieved. So this is always a requirement that we should mask the taste and odor of the drug. The next reason is a sustained release medication. Again, this is coming for the convenience of the people. Earlier, if you take metformin, today metformin is having sustained release SR formula. Earlier metformin, people used to take 6 to 8 tablets in a day because it is having very short duration. So if you take after 1 hour, again your sugar level will start moving up. So now that is converted into the sustained release formulation where you can, in 2 to 3 tablets, you can manage your blood sugar, full day dose. In the similar way, there is a lot of tablets where instead of taking 3 to 4 times a day, now you can take 1 time a day. So this is the patient convenience. Then controlled release medication. In controlled release medication, what happened? There is a requirement that we should give some initial dose and then some maintenance dose. So in controlled release medication, the drug will remain in the body
release slowly for a longer period of time in a very controlled environment. Again, this is from the convenience point of view. So these are the various reasons why we need dosage form. I think you understand. There are questions coming in the competitive exams as well as your B Pharmacy and D Pharmacy exams, that what is the requirement of dosage form? Why should we have dosage form? So this discussion will help you in writing that exam. So in previous slides, we understood what is drug, what is dosage form, and what is the requirement of dosage form. Why do we need a dosage form? So now let us look at what are the different type of dosage form, means classification of dosage form. So we can classify the dosage form at multiple discipline with multiple types. The first and the most common type is the classification of dosage form based on the route of drug administration. I will tell you detail about the route of drug administration in a separate video. So from the route of drug administration, the dosage forms are divided into mainly in three categories. One is the oral. Oral means the drug is taken through the oral buccal. So mainly oral, sublingual and buccal. These are the three subcategories of oral route of drug administration. The second is coming the parenteral drugs, parenteral dosage form. In this particular category, there are injections, intramuscular injection, intravenous injection, subcutaneous injection, intradermal injection, and the other routes of drug administration. So other dosage form like the inhalation, rectal or vaginal route, ophthalmic route, otic means putting in ear. So these are the various classification of dosage form based on the routes of drug administration. The next stream of classification of dosage form is based on its physical state of material, like solid, liquid, semi-solid. And when physical state of material is getting mixed with the route of drug administration, this classification comes like something solid dosage form for oral use. It is called oral solids or oral solid dosage forms. And the main subcategories are tablets, capsules, oral powders. There are oral dosage forms that is not, solid dosage form that is not for oral use, like dusting powder, sterile powder for injection. There are liquid orals, means the liquid dosage form meant for oral administration. So these are solutions, suspensions, emulsions. So there are liquid dosage form, those are for injection, that is called sterile liquids. And there are topical liquids like liniments, lotion, nasal spray, ophthalmic and or otic solution. Topical liquids are not meant for internal use, not for the oral use. It should be applied either on the skin or inside the body cavities for local relief. Then the next is semi-solids. In semi-solids, it is ointment, paste, creams, gels. These are the various dosage forms. Now, what is the difference between ointment and paste? Ointment is mainly the bulk is the fat or oil base, where paste is having suspended high amount, around 80 to 90% amount of solid suspended in the vehicle. Creams these are the emulsion type, emulsion bases, semi-solid emulsions, and gels these are mainly aqueous preparation made semi-solid with the help of the gelling agents. The other semi-solid dosage form is the suppositories. These are mainly solid dosage form, appearing solid dosage form, but it is designed in such a way that when it is inserted into the body cavity, either the rectal cavity or vaginal cavity, it is melting at the body temperature and releasing the drug. Then nasal and dental cones, these are semi-solids. Then in the gaseous dosage form, there are aerosols, medical gases, inhalers. The example you can say that Move spray, Volini spray, Raleigh spray. These are all gaseous dosage forms, aerosols. The next is NDDS. NDDS means Novel Drug Delivery System.
These are the new inclusions. A lot of work is happening in this area. So in NDDS, there are nanoparticles, microcapsules, lysosome, transdermal drug delivery system, and biomolecules. These are the different technology on which the work is happening. So we will conclude this session here. आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम बात करेंगे सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म्स और मेनली ऑन टैबलेट. अगले सेशन में in the next session we will discuss more about the tablet, its manufacturing, formulation, processing and all those things. So till the next session, thank you very much and happy learning.